over and therefore insurance company's liability will be only to the extent of rupees 2 lakhs. Over and above rupees 2 lakhs, liability will be borne by the owner driver of the offending vehicle. That means that out of the total sum of rupees 3 lakhs 88,240, which will be payable along with 6% interest from the date of filing of the claim petition till the date of actual payment, comma, sum of rupees 2 lakhs along with accrued interest will be payable by the insurance company, and remaining amount of rupees 1,88,240 along with accrued interest will be payable by the owner driver of the offending vehicle. In above terms, appeals are disposed of. Number 10, petitioner himself in Vikram Singh. One for the petitioner, Shri Vikram Singh, for the respondent. By way of indulgence, case is adjourned, list after 4 weeks. Number किस ग्राउंड पर है मैडम आपकी अपील? Yes, my lord. Absence of driving license, my lord, and penal interest is awarded by the tribunal. Penal interest तो हटा देंगे जी, उसके लिए आपको बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. absence of ड्राइविंग driving लाइसेंस license, क्या my एविडेंस lord. लीड करी आपने, किसको एग्जाम नहीं, कराया, कोई evidence lead तो फिर नहीं. कैसे हो जाएगा? My lord, I am relying this judgment 2018, 2018 in which the Honorable Apex Court in Para 12, का क्या है कुछ साइटेशन? 2018 Volume 3 SCC 208, my lord. जी सर, लेकर आइएगा. Para 12, it is observed. My lord, I think madam is arguing some other case. ये policy cancellation वाला case है. Oh, sorry. I've taken out wrong file, my lord. I'm sorry. Policy cancellation or Yes, there is a policy whether cancel. intimation was Yes, given. on this thin line, my lord has to examine. My lord, Exhibit D1 is the date of check. accident क्या है? Date of accident is, my lord, 11/7/2008. अब तो मैडम सही फाइल है आपके पास. जी 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 बिल्कुल सही. रूपरा साहब ने गलत फाइल दे दी आपको. नहीं सर, दो फाइलें थे. Sir, check was given on 27/6/2008. 27/6/2008. Yes. Check was given. Check was dishonor, my lord. Dishonor. जी. Policy was issued on 17/6/2008. 17/6/2008 policy issued. Yes. हाँ. My lord, आपने intimation कब दी? हमने इंटीमेशन 4/7 को दे दी सर, कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी. 4/7/2008. जी Intimation given. जी. When was it served? It was served, my lord, prior to the accident. Prior to the accident. Yes. The accident is dated. इसकी एविडेंस आई है. चलिए, एक्सीडेंट की डेट तो बता. 4/7/2008. समर सिंह की गवाही है. पढ़िएगा, समर सिंह की गवाही. Yes, sir. My national insurance company, so and so, para 1, my lord, we can skip. उसका कोई मतलब नहीं. para 2, उक्त पॉलिसी बीमा धारक धर्मेंद्र चोटले के वाहन इतने के लिए जारी हुई थी. मूलतः उत्तर प्रदेश का था, जो बाद में इंदौर आरटीओ में ट्रांसफर हुआ. जी. वाहन की बीमा 17/6/2008 से 16/6/2009 तक किया था. बीमा धारक द्वारा उक्त वाहन का बीमा चेक क्रमांक 13/6/8 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा के माध्यम से प्रीमियम राशि का भुगतान कर दिया था. उक्त चेक क्रमांक 100 राशि का था. उक्त राशि के भुगतान के लिए हमारी कंपनी द्वारा बैंक ऑफ कंपनी के खाते में 24/6/8 को जमा किया था. डेट बताइएगा इसकी. 24/6/2008. D6 की डेट क्या है? किसकी सर? D6 की जी. पोस्टल रिसिप्ट की. D6 आपका D5 नोटिस है, रजिस्टर्ड नोटिस है जी. इस पे 4/7/2008 लिखा हुआ है. जी जी. D6 रसीद है. D6 D7 जी जी. इसकी डेट पर दीजिएगा. इसकी डेट पढ़ने में नहीं आ रही. दैट इज द मोस्ट रिलेवेंट डेट.
D6 and D7 मतलब जी जी, D2 से क्योंकि जो आपका ये लगा हुआ एक्नॉलेजमेंट कार्ड लगा है, जी उस पे जो डेट है वो 15/7/2008 है, इसलिए आपसे पूछना पड़ रहा है। जी जी बाकी सारी सील जो है ब्लर है। जी। जी, अगर सूचना मिल गई थी तो ये 4/7 की है सर वो जो नहीं, अरे 4/7 को आपने भेजी किस तारीख को? आपका कोई डिस्पैच रजिस्टर वगैरह कहाँ प्रूव कराया आपने? यही तो पूछ रहे हैं आपसे। ये सर पैरा 5 में चेक अनादरण के बाद हमारी कंपनी द्वारा बीमा धारक को एवं आरटीओ इंदौर को दिनांक 4/7/2008 के पत्र द्वारा पंजीकृत डाक से चेक अनादरण हेतु सूचित किया था, जिसके बाद हमारी कंपनी ने पृष्ठांकन क्रमांक सो एंड सो के माध्यम से पॉलिसी निरस्त कर दिया था। D1 चेक है, D2 बैंक ऑफ इंदौर का मेमो है, D2 चेक D3 बैंक ऑफ बड़ौदा का मेमो है जी जो इनका खाता होगा। जी ठीक है, सूचना पत्र दिनांक 4/7 D4 व 5 है जी और प्रदर्शित रसीद जो है D6 व 7 है। D6 व 7 की रसीद पूछ रहा हूं मैं आपसे, और जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड है वो D8 है। D8 में जो डेट दिखाई दे रही है जी और डेट दिखाई दे रही है 15/7/2008। D8 की सर D8 की देखिएगा, पीछे आपको ओरिजिनल दिखा देते हैं, ये लीजिएगा। नहीं सर आप बोल रहे हैं तो सर नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, आपको इंश्योरेंस कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, संतोष आपका जरूरी है, क्योंकि रसीदों पे कोई डेट नहीं है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए था कि वो अपना डिस्पैच रजिस्टर लेकर आते और यह प्रमाणित करते कि किस तारीख को डिस्पैच किया गया। This has not been denied by them. नहीं, अरे, They simply say इट इज योर केस, यू हैव टू प्रूव इट। 15/7 की डेट दिखाई दे रही है आपको एक्नॉलेजमेंट कार्ड में, पीछे सील लगी हुई है, 15/7 की डेट स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये वाली देख रही हूँ सर जो भेजी है D6 उसकी भी डेट बाद की दिखाई दे रही है। तो एक्नॉलेजमेंट कार्ड आप ही ने लगाया है, आप ही को प्राप्त हुआ है। जी पोस्ट ऑफिस से ही वो ले लेते कि किस तारीख को तामील हुआ है। तो सर ठीक है, 15/7 है ना, चलिए दीजिएगा। दिस अपील फाइल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, My lord, judgment covers. award dated My lord, my cross appeal is also there. Child death case, 1,80,000 only awarded. ठीक है, एक्शन आते हैं उस पे। This appeal and cross objection have been filed by the insurance company and the claimants being aggrieved of award dated 1/10/2009 passed by 9th Additional Motor Accident Claims Tribunal Bhopal in MCC number 1798 of 2008. Next pair. Learned counsel for the insurance company submits that a policy was issued ensuring the offending vehicle bearing registration number MP09KD 6693 from 17/6/2008 6 नंबर की डेथ हो full stop. Accident took place on 11/7/2008 full stop. On 27/6/2008 intimation was received in regard to dishonor of check full stop. Return memo received from two different banks, that is Bank of the Drawee and the Drawer, are enclosed as exhibit, sorry, D2 and D3 full stop. Dishonored check is exhibit D1 full stop. Check was returned due to insufficient balance. Next paragraph. Notice exhibit D4 and D5 were respectively issued to the owner of the bus and the driver and the regional transport officer RTA Indore as contained in exhibit D4 and D5 dated 4/7/2008. Full stop. Postal receipts are D6 and D7
and the acknowledgement card received from the office of from the insured Dharmendra Chokse is Exhibit D8. Full stop. Thus, it is submitted that since policy was cancelled and due intimation was given to the insured prior to the date of accident, therefore insurance company should have been exonerated. Next para. Shri Kapil Patwardhan in his turn submits that this is a case of death of कितने बड़े बच्चे का है 6 to 8 years, ma'am. 7 years. 7-year-old boy. He has been awarded a compensation of rupees 1,80,000 only. Full stop. Date of accident is 11/7/2008. Therefore, there should be enhancement in compensation. Court fees कितनी लगाई है आपने? My lord, not paid नहीं school लगा। fees, my lord. The Court fees interest आज will- दीजिएगा, ब्याज आज से मिलेगा. my lord. चलिए, next pair. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, acknowledgement which is dates on the postal receipts are not readable. A fact which is acknowledged by learned counsel for the appellant insurance company also. Full stop. The date which is readable on the seal which is available on Exhibit D8 acknowledgement card produced by the insurance company reveals that it has a date of 15/7/2008. That means that notice was delivered on or after 15/7/2008, and therefore on the date of the accident there was no intimation available to the insured about dishonor of the check or cancellation of the policy. Therefore, third party cannot be made to suffer, and accordingly, and this is the ratio of the law laid down by Supreme Court in United India Insurance Company Limited versus Lakshmamma and others 2012 का 5 SCC 234 full stop. This issue has been dealt with by this court in National Insurance Company Limited versus Ramu Prasad and others in MA number 1802 of 2003, decided on 26 September 2022. Next para. Thus, when there was no intimation available to the insured about dishonor of the check on the date of the accident, insurance company cannot be held liable, cannot be exonerated of its liability to satisfy the award in favor of the third party, that is the claimant. Full stop. However, it will be free to recover said amount from the owner driver of the offending vehicle. Next para. As far as compensation awarded in favor of the claimant is concerned, this court has taken a view and is awarding a sum of rupees 4,50,000. My lord. 4,50,000 in case of death of a 7-year-old girl/boy, and therefore there will be enhancement to the tune of rupees 2,70,000 in favor of the claimants. Full stop. Since claimants have not paid any court fees and they propose to pay court fees today, this additional amount of rupees 2,70,000 will carry interest at the rate of 6% from the date of the payment of court fees, that is from today, and they are not entitled to any interest for the period prior to the date of payment of court fees. In above terms, appeal and cross objection are allowed and are disposed of. Oblige. दे दीजिएगा आप कोर्ट फीस पूरे 4.5 लाख पे, उस 270 पे 270. Oblige, my lord. Great. इसका अमाउंट को इन्वेस्ट करा दीजिएगा 10 साल के लिए. Injury case appeal for enhancement. रिपोर्ट दीजिए. 31,000 had been awarded. हाँ? Injury case
अपील फॉर एनहांसमेंट। हाँ, लोक अदालत में क्यों नहीं किया आपने ये सब? और से इसमें पीडी नहीं माना है। अच्छा, डॉक्टर एग्जामिन 2 सेंटीमीटर शॉर्टिंग ऑफ द लेग। अच्छा, क्या है डॉक्टर की एविडेंस पढ़िएगा। फ्रैक्चर कहाँ कहाँ है पहले ये बताइए। फीमर पे फ्रैक्चर है। हाँ, PW2 डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव। PW2 पढ़ते हैं। मैं पिछले 9 वर्षों से एक मिनट रुक जाइए। डॉक्टर सिंह। हाँ, पढ़िएगा डॉक्टर साहब की एविडेंस। मैं पिछले 9 वर्षों से चिकित्सालय अस्थिर रोग विशेषज्ञ से पढ़ता हूँ। रिलेवेंट पैरा 2 परीक्षण के दौरान उसने बताया कि वह दिनांक 29/11/2008 को दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दिनांक 30/11/2008 को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। दिनांक 6/12/2008 को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद लगभग 4 माह तक उसका उपचार बाह्य रोगी मरीज के रूप में हुआ। परीक्षण में उसके कूल्हे में बाएं तरफ फीमर हड्डी के ऊपरी भाग में अस्थिभंग था। पैर 2 सेंटीमीटर लगभग छोटा हो गया था। उसके कूल्हे में जकड़न थी। चलने में लंगड़ाहट थी। परीक्षण उपरांत उसे मेरे द्वारा 22% की स्थायी विकलांगता का प्रमाण पत्र दिया गया था। मेरे द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रदर्शित 12 आज से यहाँ पे मेरे हस्ताक्षर है। प्रमाण पत्र देते समय MLC रिकॉर्ड, एक्सरे रिपोर्ट, बेड हेड टिकट, उपचार के दस्तावेज, हाल के एक्सरे देखा था। मेरे द्वारा मरीज का भी उपचार किया गया था। प्रतिपक्ष में यह कहना सही है कि 4 माह तक आवेदक का उपचार होना में आवेदक के बताया अनुसार माइल्ड श्रेणी की कही जाएगी, विकलांगता माइल्ड श्रेणी की कही जाएगी। माइल्ड श्रेणी की। चलिए अब अन्य हेड्स में देख लेते हैं क्या क्या दिलाया गया है आपको। 15,000 लमसम लॉस ऑफ इनकम। पैरा 18 किस तारीख का एक्सीडेंट है? 29/11/2008। जी, ठीक है। 29/11/2008 को क्या थी मिनिमम वेजेस? इनकम बताइए 100 रुपए प्रतिदिन, 3,000 रुपए। चलिए, उसको क्रॉस नहीं किया। 15,000 रुपए दिला दिया। 4 माह का तो 12,000 रुपये आएगा 3,000 के हिसाब से। ठीक है। पेन एंड सफरिंग का 5,000 रुपए। उसको बढ़ा देंगे, उसको 25-20,000 रुपये। मेडिकल का 5,000 रुपए। चलिए, और सहायक के रूप में 2,000, आवागमन के 2,000, लिखिएगा। विशेष आहार पर 2,000। कोर्ट फीस कितनी दी है आपने? कोर्ट फीस दी है 7,500। 530। 7,530। हाँ, ठीक है, लिखिएगा। 3 लाख की अपील। हाँ, ठीक है। 3 लाख तो नहीं बढ़ेगा इसमें, 60-70,000 इसमें शॉर्टिंग ऑफ लेग पे 4 लाख रुपए दिया है 3 इंच में, तो हमें 2 सेंटीमीटर उस हिसाब से कंसीडर। 2 सेंटीमीटर 1 इंच से कम होता फंक्शनल डिसेबिलिटी बतानी पड़ेगी। 3 इंच में फंक्शनल डिसेबिलिटी एकदम से बढ़ जाएगी, और 1 इंच से कम में फंक्शनल डिसेबिलिटी नहीं बताई डॉक्टर ने। आपको पूछना चाहिए था डॉक्टर से, इसलिए अन्य हेड भी दूंगा मैं। देख लेता हूँ वहां कर मैंने एप्लीकेशन लगाई, उसको फोटोग्राफ भेज दिए। ठीक है, किया होगा। Being aggrieved of award dated 29/1/2010 passed by Learned First Additional Motor Accident Claims Tribunal Mandla in MACC number 32 of 09 on the ground that accident took place on 29/11/2008 resulting in fracture of femur bone. Full stop. Dr. Arun Shrivastava, who was examined before the learned tribunal, pointed out that there was shortening to the tune of 2 centimeters in the concerned leg, yet no amount has been awarded under the head of loss of earning capacity. Full stop. It is also submitted that under other heads, meager or inadequate amounts have been awarded and therefore there needs to be enhanced. Next para. SHRI. Mohammed Siddiq, learned counsel for the insurance company, supports impugned award. Next. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that Dr. Arun Shrivastava has clearly deposed in his cross-examination that the disability was of mild form. Full stop. He has certified 22% disability, but there is no mention of functional disability sustained by the claimant, and in view of such facts, no amount can be awarded under the head of loss of earning capacity
in the light of law laid down by Supreme Court in Rajkumar versus Ajay Kumar. Next, as far as other heads are concerned, looking to the nature of the injury, tribunal has awarded only a sum of rupees 5,000 under the head of pain and suffering, which is enhanced to rupees 25,000. Thus, there will be addition of rupees 20,000 under the head of pain and suffering. Tribunal has awarded only a sum of rupees 2,000 under the head of attendant, which is enhanced to rupees 10,000 at the rate of rupees 2,500 per month for a period of 4 months. Thus, there will be addition of rupees 8,000 under the head of attendant. Full stop. Tribunal has awarded a sum of rupees 2,000 under the head of special diet, which is enhanced to rupees 10,000 for same rate per. Thus, there will be addition of rupees 8,000 under the head of special diet. Full stop. Tribunal has not awarded any amount under the head of future treatment, physiotherapy, etc., for which a sum of rupees 10,000 is awarded. एक सेकंड, एक गलती हो गई. ये रूपरा मैडम वाला किसने लिखा था? आपने लिखा था. उसमें वो नहीं, इसमें नहीं था पीनल इंटरेस्ट. ठीक है, वो दूसरे केस में बता रही थी. हाँ, चलो एक बार देख लेना वर्ड को जरा. पीनल इंटरेस्ट हो तो उसको हटा देना. 10,000 under the head of physiotherapy, future treatment, etc. Thus, there will be enhancement to the tune of rupees 46,000, which will be admissible in favor of the claimant. This additional amount will also earn interest at the same rate as has been awarded by Learned Claims Tribunal from the date of filing of the claim petition till the date of actual payment. Other terms and conditions of the award shall remain intact. डॉक्टर आर के श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव. अच्छा, आर.के. श्रीवास्तव नोट दिखाइए रिकॉर्ड. आर.के. श्रीवास्तव तो जज साहब है भाई. नहीं डॉक्टर देख लेते हैं. अच्छा, आर.के. श्रीवास्तव 13 में. हाँ ठीक है, आर.के. श्रीवास्तव आपका नाम डाल दीजिएगा. डॉक्टर साहब का नाम आर.के. श्रीवास्तव. बोथ आर आर के. हाँ, बोथ आर आर.के. बताइएगा Lordship, क्या है ये. that is the injury case, Lordship. हाँ, Para 13 of the findings of the doctors, Lordship, statement of the doctors. पैरा Para 12. 12 of the award. Yes, Lordship. I am reading the relevant portion, Lordship. एक सेकंड रुक जाइएगा. 60% permanent disability. पैरा 12 पढ़ रहे हैं ना, Lordship. पढ़िएगा. आवेदक की ओर से डॉक्टर नंद किशोर पटेल का कथन है कि स्थायी विकलांगता प्रमाणित करने के लिए कराया गया था. डॉक्टर नंद किशोर पटेल 2 ने अपने कथन में बताया कि वह जिला चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ है. दिनांक 17/9/2010 को मेडिकल बोर्ड द्वारा आवेदक राम मिलन का विकलांगता के लिए उसका परीक्षण किया गया था. यह पाया था कि उसके दाहिने पैर की गति चलन नहीं था, दाहिने अग्रभुज में विकृति थी, दाहिने पैर में फुट ड्राफ्ट था. राम मिलन को कुल 60% स्थायी विकलांगता पाई गई थी, जिसका प्रमाण पत्र P1 जारी किया गया था. तत्पश्चात 7/10/2011 को मेडिकल बोर्ड द्वारा राम मिलन का पुनः परीक्षण किया गया. परीक्षण करने पर यह पाया कि दाहिने पैर के घुटने में रुकावट थी, जिसका रेंज कुल 10 डिग्री थी. दाहिने पैर के फुट ड्राफ्ट था. दाहिने टखने की गति चलन में रुकावट, जिसकी रेंज 30 डिग्री थी. दाहिने पैर में शून्यपन था. कूल्हे में ऑस्टियोपोरोसिस था. दाहिने घुटने में प्लेट लगी थी एवं हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस था. दाहिने हाथ की हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस ठीक है, था. तो क्या माना क्या इन्होंने? लॉर्डशिप, इसमें लॉर्डशिप परमानेंट डिसेबिलिटी की हेड में इन्होंने क्या दिलाया? लॉर्डशिप उसमें पैरा 14 देख लें. हाँ, तो कोर्ट ने वैसे माना नहीं है और फ्यूचर का मानते हुए 60,000 दिया है. पैरा 14 क्यों नहीं माना ये तो समझा है. ये पैरा 14 में मैं पढ़ देता हूँ. हाँ, राम मिलन ने अपने कथन में बताया कि वह दुर्घटना घटित होने के पहले खेती करता था एवं इनकम छोड़ दीजिए, इनकम तो बेकार है, इनकम मत पढ़िए. नहीं, इनकम मैं भी नहीं मानूंगा. नहीं, वो जो नहीं माना वो वाला पैरा बस उतना पार्ट पढ़ दीजिए. हाँ, खेती करता था. 2 प्रकार की स्थिति हो सकती है. एक
तो वह स्वयं शारीरिक रूप से श्रम करता हो और दूसरा मात्र नहीं, सुपरविजन। ये बेकार की बात तो उस हिसाब से उन्होंने कहा है ये सब ये फालतू की बात कि है। खेती में सुपरविजन दो की स्थिति हो सकती है, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये सब वो जब डॉक्टर फाइंडिंग वही है कोर्ट की। कोर्ट की फाइंडिंग परवर्स है। हाँ, वो उन्होंने उसको 60,000 हाँ, उसको फ्यूचर लॉस करके दिया हुआ। एंड लेट्स नेचर ऑफ इंजुरीज में पैसा नहीं दिया इसमें। सब करा देंगे ना, लेट्स देंगे। लेट्स अपील 190 की है इनकी, 1,90,000 की है। हाँ बस। ठीक है। This appeal is filed by the claimant being aggrieved of award dated 24/11/2011, passed in claim case number 02 of 2010 by learned first additional member to First Motor Accident Claims Tribunal, Damo, on the ground that Dr. नंद किशोर Nand Kishore Patel was examined in support of the disability certificate, full stop. Exhibit P1 was produced where doctors had certified 60% disability. Subsequently, exhibit P256 was produced in which disability was found to be 70%. Next paragraph. It is submitted that accident took place on 8/12/2009. Claimant Ram Milan had sustained fracture of राइट लेग, राइट नी में है। right leg. There was rupture of veins of the waist and operation was performed on the waist as well as the leg. There was shortening of the leg and permanent disability. It is submitted that he had also sustained lacerated wound on left clavicle bone, left eye, and bleeding from the right ear. Full stop. He was treated at Sushrut Hospital, Nagpur. Prescriptions of which were produced from Exhibit P105 to P108. Next paragraph. It is submitted that when Dr. Nand Kishore Patel certified 60% permanent disability with foot drop and further deposed that the said disability was in relation to the complete body, then tribunal erred in awarding a lump sum of rupees 60. कहाँ दिया इसमें? लॉर्डशिप पैरा 14 के लास्ट में है, 15 के ऊपर ही है। भविष्य की आय की कमी में 60 awarded only sum of rupees 60,000 under the head of loss of earning capacity, which cannot be said to be just and correct. Next para. On the date, even under others heads, meager amounts have been awarded by the learned tribunal. Next, VK Trivedi, learned counsel for the insurance company, supports impugned award. इसमें साफ कॉपी पढ़ने वाली ले लीजिए, इसको मैं आंखें नहीं खोल सकता हूँ। कल भी मैंने बोला था, ये मैसेज दिया था। साफ कॉपी कराने में क्या प्रॉब्लम है? इसको दोबारा टाइप कराइए, बैठे रहते हैं ये, इनसे बोलिए टाइप करेंगे दोबारा। Minimum wages on the date of the accident, even for an unskilled laborer, were to the tune of rupees 3,620 per month or rupees 43,440 per annum. Full stop. इनकी एज क्या आई है? क्लेमेंट 34 years है? 34 हाँ देखिए, ठीक है। Doctor has certified 70% permanent disability. Even if functional disability is construed at 30%, then
looking to the minimum wages of 3620 per month or rupees 43,440 per annum. 30% of this will come out to rupees 13,032 per annum. Full stop. 40% is to be added towards future prospects. And then when multiplier of 16 is applied, then claimant will be entitled to a sum of rupees 2,91,917 in place of rupees 60,000 awarded by learned claims tribunal. Thus, there will be enhancement to the tune of rupees 2,31,917 under the head of loss of earning capacity. Full stop. Besides this, tribunal has not awarded any amount under the head of pain and suffering, which is awarded at the rate of rupees 25,000. Besides this, tribunal has not awarded any amount under the head of has only awarded rupees 25,000. Has not awarded has awarded only a sum of rupees 10,000. तो 15,000 रुपए बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना, तो 10,000 रुपए इसमें कम हो जाएंगे. And has awarded only 5,000 rupees towards attendant, which is enhanced to rupees 10,000. Thus, there will be addition of rupees 5,000 under the head of attendant. Full stop. Tribunal has nutritious diet के लिए कुछ दिया है क्या? No letters. हाँ? Has not awarded any amount under the head of nutritious diet, which is awarded at the rate of rupees 2,500 per month for a period of 4 months. Full stop. A further sum of rupees 20,000 is awarded under the head of future treatment, physiotherapy, etc., taking total compensation to rupees. गड़बड़ हो गया, ये जोड़ लीजिएगा पूरा. ये कितना आएगा? एक जहां मैंने वहां कुछ फिगर लिखाई थी ना, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी वाली, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी की फिगर आई थी ना, 2,09,7017. इसमें से 60,000 रुपये घटाया था, हैं? हाँ, तो 2,31,917 रुपये आया था. इसके आगे 15,000 रुपये पेन एंड सफरिंग का दिलाया है, ठीक है. 10,000 रुपये उसका दिलाया न्यूट्रिशियस डाइट का. 5,000 रुपये अटेंडेंट में बढ़ाए हैं और 20,000 रुपये फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए बढ़ाए. टोटल एनहेंसमेंट आ जाएगा 2,81,917 रुपये. अपील इज फाइल्ड ओनली फॉर अ सम ऑफ रुपीज 1,90,000. 1,90,300. हाँ, 300. तो बाकी पे कोर्ट फीस देंगे कि इसको दे देंगे. आज दे दीजिए. जी. हाँ. Appeal is filed only for a sum of rupees 1,90,300 rupees. Thus, claimants will be entitled for interest at the rate of 6% on this amount from the date of filing of the claim petition till the date of actual payment, and for the remaining amount of rupees 91,617 for which court fees is being paid today, interest will be payable from today at the rate of 6% till the date of actual payment. Other terms and conditions of the award shall remain intact. Thus, claimant will be entitled to an additional sum of rupees 2,81,917 in above terms. कंपनी अपील ओनली सिंगल ग्राउंड माइलेज इसमें, इसमें डेट ऑफ एक्सीडेंट के समय पॉलिसी नहीं थी हमारी गाड़ी की, दूसरी गाड़ी की थी माइलेज इसमें, दूसरी गाड़ी की थी. और इसमें जो पॉलिसी पेश की गई है मतलब उसमें दूसरी गाड़ी की पेश गई थी, वो हमारे यहाँ से इंश्योर्ड नहीं थी. पैरा 9 में डिस्कशन है मतलब, तो हमने 2 डॉक्यूमेंट लगाए हैं.
पेज नंबर 20 और 21 and 23 and 24. Para 9 of the award. Yes, madam. Issue number 3. एक मिनट रुक जाइए. ऑफेंडिंग व्हीकल का नंबर क्या है? इसमें मैं पढ़ के बता दूं. इस एक बात मिनट मेरे को पहुंचने तो दीजिए वहां Yeah. तक, तब तो आप पढ़ेंगे. अवार्ड कहाँ लगा है इसमें? देखिए इसमें अवार्ड कहाँ लगा? मेमो अपील की कॉपी, इससे देख लेंगे अवार्ड. पढ़िए अवार्ड में क्या हो गया. यू आर रीडिंग विच पैराग्राफ? पैरा 9 मतलब इस बात प्रस्तुत प्रमाणित करने का भार बीमा कंपनी पर था. इस संबंध में बीमा कंपनी की ओर से R.K. मुखर्जी का कथन कराया गया, जिसके द्वारा अपने कथन में बताया गया कि रीवा कार्यालय से मार्च 2012 से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थ शाखा कार्यालय रीवा द्वारा जारी पॉलिसी सो अनिल कुमार पटेल के स्वामित्व की महिंद्रा जीप क्रमांक इतना इतना के लिए जारी की गई है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है, जो प्रदर्शन D1 है. प्रकरण में प्रस्तुत नर्मदा प्रसाद शर्मा के नाम पर पॉलिसी सो का उनके कार्यालय द्वारा कोई बीमा नहीं किया गया और न ही 12/6/2000 को 1599 रुपये प्रीमियम राशि की प्राप्त की गई. वाहन क्रमांक सो का बीमा कार्यालय से नहीं किए जाने से बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है. प्रति परीक्षण में साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि प्रकरण में जो बीमा पॉलिसी की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है उसमें उसके कार्यालय की सील प्रतीत होती है. यह भी स्वीकार किया कि कलेक्शन क्रमांक 812 का रिकॉर्ड आज नहीं लाया हूं. यह भी स्वीकार किया कि जो पॉलिसी के दस्तावेज आवेदक की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं उनके पॉलिसी नंबर स्पष्ट न होने के कारण सही जानकारी नहीं मिल पा रही. प्रकरण के तो ये रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में क्या तकलीफ थी आपको? कलेक्शन नंबर 812 का, उससे स्पष्ट हो जाता कलेक्शन नंबर 812 में कि 812 का रिकॉर्ड क्यों नहीं प्रस्तुत किया आपने? नहीं, वो आप उस समय लाए नहीं थे, प्रस्तुत नहीं किया मैंने. हाँ तो इसीलिए तो पूछना आपसे. इसमें जो हमने एक डॉक्यूमेंट लगाया है मैंने A2 पेज नंबर 20 मैंने. एक अपील के साथ? हाँ प्लीज. तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट डायरेक्ट फाइल हो जाता है वकील साहब? जी डॉक्यूमेंट फाइल हो जाता है डायरेक्ट? नहीं, वो अपील ही के साथ में हमने पेश किया था, जो अपील पेश की थी मैंने. हाँ इस अपील में A2. हाँ हाँ पेज नंबर 21. इसमें एक बयान है मलट. हाँ. रीवा कार्यालय से मैं मार्च 2000 को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थ हूं. प्रकरण में हमारे कार्यालय रीवा द्वारा जारी पॉलिसी सो श्री अनिल कुमार पटेल के स्वामित्व की महिंद्रा मार्शल जीप का नंबर सो पॉलिसी सो तक की अवधि के लिए बीमा पॉलिसी जारी की, जिसके कार्यालय की कार्रवाई प्रति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर प्रकरण में प्रस्तुत की, जो D1 है. प्रकरण साथ ही प्रकरण में हमारे रीवा कार्यालय में दिनांक 12/9 को प्रीमियम कलेक्शन. स्टेटमेंट कैसे पढ़ लिया जाएगा यहाँ पर? ये स्टेटमेंट कैसे पढ़ लिया जाएगा दूसरे केस का? नहीं, इसी केस का है मैंने. इसी केस का है तो ये इसी केस का. हाँ. इसमें हमने लगाया ना काला तिवारी. अच्छा ठीक है. नर्मदा प्रसाद. तो फिर ये बात कहाँ से आई है? क्रॉस में पूछा होगा ना. हाँ इसका ये कलेक्शन क्रमांक 812 का रिकॉर्ड आज नहीं लाया हूँ. नहीं लाया है ये. अब पॉलिसी क्रमांक तो सही लिख रहे हैं ये,
पॉलिसी का भी रिकॉर्ड लेकर नहीं आए, कलेक्शन का भी रिकॉर्ड लेकर नहीं आए। लेकिन मालट जो ये पॉलिसी जो पेश की है, जो पेज नंबर हमने 24 में लगाया है A3 में, इसमें देखेंगे महाराज ये साइड में 15/27/2 जो पॉलिसी का जो मालिक है अनिल कुमार पटेल, इसका गाड़ी का नंबर इसमें देखेंगे, गाड़ी का नंबर है MP17B। एक सेकंड, पॉलिसी का नंबर तो बताएं। हाँ 152702 क्या लिखा, ऑफिस कोड लिखा है। हाँ ऑफिस को पॉलिसी नंबर कहाँ लिखा है इसमें? नहीं, इसी से जो नंबर मैं पढ़ के बता रहा हूँ सर, इसी में है रिलेटेड। क्या लिखा है? ये जो मैं 702 नंबर जो बता रहा हूँ पॉलिसी का, हाँ ये जो पैरा नंबर 21 में पढ़ के बता रहा हूँ, हाँ इस अनिल कुमार पटेल के नाम से जारी की गई है। जो क्लेमेंट ने जो पार्टी बनाया है जी। रिस्पोंडेंट 1, वो नर्मदा प्रसाद शर्मा को बनाया है। नहीं वो तो ठीक है, हम आपसे सहमत हैं। वही ये एविडेंस आपने, ये एविडेंस में आया है नीचे कि ये जो पॉलिसी है 152072 हाँ 2007/72, हाँ ठीक है, इसमें तो आपने कहा है एग्जामिनेशन चीफ में कि कोई बीमा नहीं किया गया। आपने कब कहा कि ये पॉलिसी इनके नाम से नहीं, अनिल कुमार पटेल के नाम से है? ये इसमें इसी में आगे जो पैरा 21 है ना, इसी में पूरा लिखा है मतलब। मैं बयान इनका एक अधिवक्ता द्वारा जो बयान है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। रीवा कार्यालय में मार्च द्वारा वरिष्ठ विधायक के पद पर हूँ। प्रकरण में हमारे शाखा कार्यालय में रीवा द्वारा जारी पॉलिसी इतना अनिल कुमार पटेल के स्वामित्व की महिंद्रा मार्शल जीप, जिसका नंबर इतना है 6/4/2000 से 5 तक की अवधि के लिए बीमा पॉलिसी जारी की, जिसके कार्यालय कार्य प्रति प्रमाणित कर प्रकरण प्रस्तुत की जो D1। साथ ही प्रकरण में हमारे रीवा कार्यालय द्वारा 12/9 को प्रीमियम कलेक्शन की 2 स्पष्ट रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित जो D3 है। प्रकरण में प्रस्तुत नर्मदा प्रसाद शर्मा के नाम पर पॉलिसी इतना का हमारे कार्यालय द्वारा ना तो कोई बीमा किया गया और ना ही। कहाँ है वो देखें तो, वो डॉक्यूमेंट तो देखें, कहाँ है वो डॉक्यूमेंट? ये इसमें हमने जो डॉक्यूमेंट लगाया, आपने नहीं लगाया, रिकॉर्ड ये दिखाइए। 23 जो क्लेमेंट ने जो प्रस्तुत किया है उसको बताइए। नर्मदा प्रसाद की गाड़ी हाँ, का ये दैट इज एग्जिबिट। एग्जिबिट B शायद 13 है, एग्जिबिट 13 है। एग्जिबिट 13 देखते हाँ, हैं। इसमें पॉलिसी का भी लिखा है। हाँ देखते हैं ना। ये नहीं, एग्जिबिट D1 27/2/15। जीवन अलग है, जो मैं पूछ रहा हूँ क्लेमेंट ने जो प्रस्तुत किया था कवर नोट 12C है वो, नर्मदा प्रसाद शर्मा। MP17W0451। In case of claim, please quote policy number as 152702. आपका कहना है 152702 was issued in name of Anil Kumar Patel. हाँ, बस हमारा यही कहना है। ठीक है। Here this appeal is filed by the insurance company being aggrieved of award dated 4/4/2015 passed by learned Second Additional Motor Accident Claims Tribunal CD in claim case number 302/2014 on the ground that photocopy exhibit P12C was produced by the claimants to show that offending vehicle MP17W0451 M&M Jeep, year of manufacture 1984, was insured with the Oriental Insurance Company, that is the present appellants, and therefore liability has been fastened on the insurance company. It is submitted that Exhibit D1 is the policy issued under policy number 152702 and that was to insure Mahindra Marshall Jeep bearing registration number MP17B5934, registered owner Mr. Anil Kumar Patel, and therefore on inappropriate appreciation of evidence, learned tribunal has fastened liability on the insurance company. Next para.
Nobody is appearing for the respondents, though name of the counsel is being reflected in the cause list. Next, they are proceeded ex parte. A perusal of Exhibit D1 reveals that the policy in question as contained in Exhibit D1 was issued ensuring vehicle MP 17B5934, which happens to be a Mahindra Marshall Jeep, and to this effect, evidence was led by the insurance company officer Shri R.K. Mucharia. Full stop. There was no ground to disbelieve the evidence. Full stop. Merely disbelieve this evidence. Therefore, relying on photocopy, where in case of claim, please quote policy number as 152702 is mentioned, it is evident that when the carbon copy of the policy was available on record as Exhibit D1, and it clearly makes a mention of the fact that it was issued in favor of Anil Kumar Patel, having vehicle bearing registration number MP 17B5934, insurance company should have been exonerated as onus was on the claimants and the owner driver to have produced the original policy to dispute the evidence of officer of the insurance company, namely Shri R.K. Mucharia. Full stop. Since there is no rebuttal to the said evidence, impute award deserves to be modified and is hereby modified. Since there was no insurance on the date of the accident for the offending vehicle. वो जो number आया था 471 क्या था? The insurance company cannot be fastened with the liability. Claimants will be entitled to recover the awarded amount from the owner driver of the offending vehicle. Insurance company is hereby exonerated. Appeal is allowed and disposed of. Serial number 15. Serial number 15. Lordship, in compliance of order dated 19/9/2023, we have supplied the copy of the policy D4 to the counsel for the insurance company. आपने verify कर लिया? My lord, है insurance था? वो इंश्योरेंस इसका प्रीमियम 100 रुपए दिखा रहा है my lord. Breakup that is for owner driver. The tribunal have dealt with this issue in para 20 of the award. क्या कहा उसने? मैं ये बोला है ट्रिब्यूनल ने, आवेदक की स्थिति ड्राइवर कम ओनर की भी नहीं है. ऐसी स्थिति में किसकी है उसकी आवेदक की स्थिति? आवेदक बैठा हुआ था. रिस्पोंडेंट नंबर 1 वाज ड्राइविंग द व्हीकल, राजेश राठौर, और with the truck met with an accident, dashed against the tree. Claimant lost his one limb, और हाथ उसका कट गया. क्लेमेंट किस हैसियत से बैठा हुआ था ट्रक? अब क्लेमेंट तो मालिक है, ही इज द इंश्योर्ड. इंडेमनिफाई हमको उसी को करना है. तो ही हिमसेल्फ इज क्लेमिंग. तो 163A में तो क्लेमेंट अब उसमें तो नहीं होगा. अब पर्सनल एक्सीडेंट जो उसका कवर है उसके ऊपर है. ट्रिब्यूनल ने ये माना है कि ये he was not the driver. Had he been the driver, he was not a driver. अब आपको पॉलिसी दिखाइए. पॉलिसी में पॉलिसी कहाँ है? दिखाइए. उसमें 2 लाख तक की रिस्क का कवर है. ठीक है, तो 2 लाख तक का तो दीजिए. और अब इसमें मेलोड फेयरली इफ इट इज सीन दैट IMT 15 क्या कहता है, उसमें हम जो ओनर है, ओनर की रिस्क को कवर करना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को. IMT 15 personal accident cover to the insured or any named person other than paid driver or cleaner. मतलब in consideration to the payment of additional premium. 100 रुपए कहाँ लिखा है इसमें? कंपल्सरी PA टू ओनर कम ड्राइवर. ये ब्रेकअप भी मैंने बुलवाया इसका. ये WC to 8 एम्प्लॉइज लिखा है ना.
मैं बता रहा हूँ मैं आई एम आर्ग्यूइंग अगेंस्ट मी. हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, ये बता देता हूँ आपको. ये इसका ये ब्रेकअप है जो हमने ऑब्टेन किया है. 100 रुपए लिया है. जी. अब सिचुएशन इसकी IMT 15 की मैं पढ़ता हूँ क्या है उसमें. In consideration to the payment of additional premium, it is hereby agreed and understood that the company undertakes to pay compensation to the scale provided below the bodily injury as hereinafter defined, sustained by the insured person in direct connection with the vehicle insured or while mounting and dismounting from the or traveling in the vehicle. So he was traveling. Insured and cost to the zone. अब how it is to be paid, my lord? Death is 100%. यदि डेथ होती तो 2 लाख रुपए हम उसको देते. Loss of 2 limbs or sight of 2 eyes, that is also 100%. Loss of 1 limb or sight 50%. 50%. तो मतलब 1 लाख 1 लाख रुपए. इनको कितना दिलाया ट्राइब्यूनल? ट्राइब्यूनल ने तो खारिज कर दिया है, कंपनी को एग्जोनरेट कर दिया. 2 लाख कितना दिलाया? 2,53,000. हाँ, that is made recoverable from the driver. हाँ, तो इसको इसको 1 लाख तक हमारे ऊपर लायबिलिटी ला सकते हैं. ठीक है. श्री, मेरा ये कंटेंशन अरे- चाहे तो आप लिखा दें, नहीं तो कोई बात नहीं होती. यदि ना लिखा है तो भी नहीं लिखाएंगे. थोड़ा सा अलग तरीके से लिखाना पड़ेगा. दिस अपील इज फाइल्ड बाय द पॉलिसी दे देना आपके पास है. claimants being aggrieved of the award dated T3/2010 passed by learned Additional Motor Accident Claims Tribunal, Tehsil Rehli District Sagar in claim case number 122 of 09 on the ground that there was a valid insurance cover obtaining on the date of the accident, that is 20/1/2009 when he was traveling in truck number MP04K 1931, which had met with an accident resulting in amputation of right hand of the claimant. Full stop. It is submitted that since coverage was available under policy number 451 000 310 802 000 02881, and there was a personal accident cover for the owner driver, compensation should have been awarded to that extent. Next para. Shri. I support the findings of para 20 of the Jayant Nikra, appearing for respondent number 2, supports finding of the tribunal and submits that the liability liability has been rightly fastened on the driver of the offending vehicle as accident took place due to his negligence. Next para. After hearing learned counsel for the parties and perusing IMT 15, under which premium was charged under the compulsory PA premium, it is evident that terms and conditions of IMT 15 reads as under. दे देंगे IMT 15 please. अरे आदित्य, उसमें है तुम्हारे इसमें वो दे देना IMT 15 निकाल के बड़ा. IMT 15 reads as under. लेके कोट कर दीजिएगा. Next para. Thus it is evident that in case of death or cent percent disability, complete amount of PA cover, that is 2 lakh rupees, is to be paid. But in case of loss of 1 limb, only 50% is to be paid. Therefore, claimant will be entitled to recover a sum of rupees 1 lakh from the insurance company and the remaining awarded amount from the
driver of the offending vehicle. IMT 15 कोट कर लीजिएगा। आदित्य इसका एक प्रीमियम वो फोटो प्रिंट आउट निकाल के इनको दे देना, कोट कर लेंगे, ये लीजिए दे दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है ना। Other terms and conditions of the award shall remain intact. It is clarified, इसके पहले लिख दिया, it is clarified that insurance company will pay a sum of rupees 1 lakh out of total awarded compensation of rupees 2,53,000. 2,53,000 along with accrued interest from the date of filing of the claim petition till the date of actual payment, and remaining amount is recoverable in the hands of the driver of the offending vehicle. Other terms and conditions of the award shall remain intact. In above terms, appeal is allowed and disposed of. Your Lordship. Lordship, I am appearing for respondent of four formal party. My lord, I am praying for present single mark. हाँ, इनका शुभ नाम डाल दीजिएगा। आपका शुभ नाम बताइए। मोहन सिंह। हैं? मोहन सिंह। मोहन सिंह जी का नाम डाल दीजिएगा। Lordship, praying for 2 week time because senior is out of station because of his father have some medical issue. ओके, क्या इशू, अवार्ड क्या है देखें तो। कहाँ गए मिस्टर जयंत निकरा? जयंत निकरा साहब गए क्या? जयंत निकरा जी कहाँ गए? तो ओरिएंटल के लिए कौन है आप में से? होते हैं। आप अपीयर होते हैं? हाँ, तो आपको इसमें कोई आ ही नहीं रहा है, नोटिस ले लीजिए। विदाउट इंस्ट्रक्शन आप दे दीजिए नोटिस। हाँ, नोटिस नेक्स्ट वीक। हाँ, वही कर रहे हैं। श्री, आपका शुभ नाम बताइए। Sir, Anand Jha. Anand Jha submits that arguing counsel has some personal problem and has not come to court. Full stop. Nobody is appearing for the insurance company. This court requests Shri N.S. Rupra, who usually appears for the Oriental Insurance Company, to accept notice and seek instructions. That copy. अभी ये होगा, अगले केस में नहीं आपने नहीं हाँ, ठीक, क्या फर्क पड़ता है? मतलब कोई हाजिर नहीं था। हाँ, इसीलिए बुलाया। क्या हुआ? ठीक है, accept notice इतना इतना। Let copy of memo of appeal be supplied to Shri Rupra, who may seek instructions. List next week. चलिए, मतलब ऐसा लिख दें, मिस्टर रूपरा इज डायरेक्टेड टू एक्सेप्ट। कर दिया भैया। On our request accepts notice का मतलब क्या होता है? आदेश है जी, हमें मालूम है आप केस लेने नहीं जाते। हाँ, उन लोग बोले आप उचक के लेते हो, नहीं जितने केस आते हैं बहुत है। नंबर पांडे। क्या exoneration है क्या इंश्योरेंस कंपनी? No, sir, this matter was already decided by the order dated 16/12/2022. Malas. My appeal was withdrawn and their cross objection was allowed. अब उस ऑर्डर के मॉडिफिकेशन के लिए मैडम ने एक एप्लीकेशन पेश करी है। क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए? Modify the order dated 16/12/22 by adding the cost. 1 लाख दी कॉस्ट Cost इतना ही की? लिखा है आवेदन में। नहीं, सर 1 लाख का क्रॉस ऑब्जेक्शन था, 2,500 रुपए की कोर्ट फीस थी, पूरा क्रॉस ऑब्जेक्शन अलाउ हो गया। अब क्या बचा है इसमें? हर्ड ऑन आइए 2443/2023। नेक्स्ट, श्रीमती देविका ठाकुर appearing in support of the application submits that cost of litigation has not been awarded and a sum of rupees 1 lakh should have been awarded. Next para. नहीं 1 लाख का क्रॉस ऑब्जेक्शन था इनका, और वो जब वो कंपनी तो allowed है, अभी क्या मांग रही है? ऑलरेडी बीन कॉस्ट मांग रही है ना? हाँ, तो कॉस्ट इज मतलब इज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन। Cost should have been awarded. Next para. There is no typographical error. This court has not awarded any cost and therefore no modification is required in the impugned order dated 16/12/22. जी 16/12/22, calling for any indulgence. Application fails and is dismissed. इनका नाम डाल लीजिएगा for the appellant, इनका नाम for the respondent.
matter number 15. Please tell the committee the debate going. Malord, this is the matter which relates to the rejection of the claim of the petitioner, Malord, for refund of overcharge, Malord, on freight carried by the railway. Malord. The impugned order is Annexure A13, Lordship. A13. Yes, Lord. The claim, my lord, has been primarily dismissed, my lord, by the Railway Claims Tribunal, relying on the provision of Section 106, my lord. 106 of the Railways Act, my lord. 106 Railways Act. Railways Act, my lord, which provides that in case of claims, my lord, of refund of overcharge, a notice has to be issued by the party and served on the railways, my lord, within 6 months from the date of such payment, my lord. That is the provision which is there in the Railways Act, my lord. आपने नोटिस नहीं दिया था हमने नोटिस नहीं दिया था. That's an admitted fact, my lord. Now we are on a short point, my lord. In fact, my lord, while this the applications were being considered, my lord, by the railways, my lord, there was a circular, my lord, of 1995, my lord, which we have placed on record, my lord, as annexure. As annexure, my lord, that my lord will find as annexure. A8, lordship. A8. Yes, lord. We have also filed a typed copy of that. Typed copy of that is on the next page, my lord. It is a little not very clean copy, my lord. Please refer to the board's letters number 94 EC. यहाँ typed copy इसमें नहीं है. Please refer to board letter इतना इतना. Yes, lordship. Which is in supersession of the board letter इतना इतना. Under which board have decided to delegate full powers to general managers to settle time-barred compensation claim in consultation with the FA and CAO, irrespective of monetary limit. Since the instruction issued on 28 June 1977 were made applicable in settlement of time-barred claims for refund of overcharges, also by board number, letter number TC4 dated 2/11/1977, it is clarified that the delegation of power referred to in board letter 94 of 12/10/1994 extends not only to time-barred claims of compensation for refund of overcharge. Yes, Lord. So, my lord, similar cases were filed by Mahir Seman before this honorable court, my lord. Those petitions were allowed, my lord. Those orders are on record, my lord. That my lord will find as annexure. Annexure. That annexure A10, lordship. A10. Yes, lordship. Two issues were framed in this, my lord. I'll just point out what the issues were and what the judgment was, my lord. Two issues were framed in this, my lord. The issues, first issue related to the question of limitation, whether the limitation will apply to the claim of excess money refund cases. सारे orders में भी सीमेंट के छींटे पड़े हुए हैं. Yes, lordship. In fact, it was a certified copy which we obtained, and we have taken out a photocopy of that, lordship. So, my lord, may see para 12, my lord, where the issues are there of this judgment of the honorable court. Before reading this paragraph, I'll just place before your lordship a fact, my lord, that the railways went in writ appeal. In the writ appeal, this order was affirmed. Thereafter, the railways went to the honorable Supreme Court. The honorable Supreme Court dismissed their SLP, my lord. 12. The issues which crop up for consideration is that one, whether will not the claim of excess money charged on supposition that goods are carried by longer route for refund beyond overcharge as is provided under section 106, which restricts the claim by embargo of limitation under subsection 3. So this was the first question of limitation, my lord. We were arguing on the basis of Madhya Pradesh High Court Associated Cement judgment, my lord, delivered by Honorable Justice Pandey. And this honorable court, my lord, disagreed with that judgment because the Birla Cement case was not considered. So issue number 1 was decided against that. It was held that provision of limitation will apply. Second issue was, my lord, secondly, if an overcharge the claim for refund being expressly time barred, whether obligatory, it is for the zonal manager to have exercised the discretion of entertaining the time barred limited claim as conferred by circular number TC4944950, policy matters dated 11/1/1995. So it is now the second consideration was that despite this provision, whether
because of this circular of the railway It was board, obligatory on whether it was obligatory or that. तो इतना ही तो होगा, सिर्फ कंसिडरेशन ही तो होगा। कंसिडरेशन करना है तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सर, हमारा ये कह के कि आपका एक में टाइम बार्ड है। कुछ में उन्होंने ये कहा है कि आपका जो रेलवे का जो सर्कुलर आया था विथ रिगार्ड टू द शॉर्टर डिस्टेंस, इट वाज कैरिड थ्रू अ शॉर्टर डिस्टेंस, दैट वाज लेटर इन पॉइंट ऑफ टाइम, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर वाज दैट माय लॉर्ड दैट दे कैरिड द गुड्स थ्रू द शॉर्टर रूट। नहीं, एक सेकंड, आपने खुद ही अपने खिलाफ अच्छा पॉइंट बता दिया। सब्सिक्वेंट सर्कुलर कैसे लागू होगा? यस लॉर्ड, इनफैक्ट माय लॉर्ड मैं काइंडली सी माय सब्मिशन भी मान लेते हैं, ये जजमेंट भी मान लेते हैं, यस लॉर्ड, आपका सर्कुलर भी मान लेते हैं Yes, कि Lord. कुछ है। सो माय लॉर्ड, Notwithstanding what is mentioned in section 106, matter should have been considered by the My Journal. lord, I can answer that question in 2 seconds, my lord. My lord's question is absolutely correct, my lord. My lord, may see annexure A1. A1. Railway issues the authorization letter before starting the route, my lord. जी. That authorization letter का date देख लें lordship. जी. It is 18th February 2008. जी, So the fixation of rates has got nothing to do with the actual usage of the route. My case is this, my lord, that you charged me for a longer route, and then you obtained an authorization and you took it through a shorter route. So once you take it through a shorter route, you have to refund me the excess. That is my simple case, my lord. right. ठीक. Anything else? That is it. My lord, my respectfully submission, my lord, this is not the case of refund of overcharge. My lord has correctly pointed out, my lord, that their rejection order may kindly be seen. जी, That is annexure A7, my lord, page 35. जी. पेज 35 इसमें सर ये लास्ट में जो टिप्पणी है बिल्कुल लास्ट में है, पश्चिम मध्य रेलवे ARN 79 ऑफ 2009 दिनांक 10/6/2009 से प्रभावी है। आपके दावे इससे पूर्व के हैं, अतः सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है। Their case is that the railway has used the shorter route and the charge has been taken of the longer route. Or that short route has been made applicable with effect from 10/6/2009, and from that date their delivery was already over, and their representation may kindly be seen, my lord, for which they filed, that is annexure A6 page 34. जी. They themselves stated in their representation that refund of rupees so and so, your notification dated 10/6/2009 is submitted that a rake of 41 BC and wagons was loaded with cement so and so. मतलब ये तो नीचे है ना, through this short route, distance 504 kilometers So, since December 2008. Since this case of error in distance, it does not fall under the purview of rule number इतना. इनका ये जो सर रूट शॉर्ट हुआ है, ये हुआ है 10/6/2009 को, और उससे पहले ही इनका जो बुकिंग हो गई थी, डिलीवरी हो गया था, पेमेंट हो गया था। तो ये जब रूट ये तो बात हमने इनसे पूछ रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव, ये बस इतना ही है इसमें। वही मैं आंसर किया लॉर्डशिप। मालूम है काइंडली सी annexure A1, the authorization letter of the railway board, having inspected on 16/2/2008 the opening of single line, this is the shorter line, opening of single line between Banspahar Chand section Cord line for passenger traffic from kilometer 1253.40 to 1258.83 CSTM length 5.23 of Jabalpur division of West Central Railway, and having satisfied myself that the provision of section 22(1) of the Railways Act 1989 have been substantially complied with, I hereby authorize under the powers delegated to me by Railway Board notification number GSR 625E dated 21/7/2000 and notification number GSR 672E dated 8/10/2010 operation of passenger traffic on Banspahar Ohan section of West Central Railway at the speed of 60 km per hour subject to the following conditions: observation of all other permanent and temporary speed restrictions as imposed by the railway administration from time to time. So the line was opened on 18th with effect from 18th February 2008, and my goods were carried on this new line. What they are arguing is that we issued the rate circular in 2009. Rate circular may be different thing, my lord. Rate circular is the price, fixation of price. You'll have to, there is a final print here.
Yes, Lordship. It was opened for only passenger traffic. It was not opened for goods traffic. But my lord, they have carried it on goods. They have carried it or not, Yes, that's a different issue. When we go by the authorization, Yes, sir. authorization was only for passenger traffic and not for goods traffic. And therefore, when authorization came for goods traffic with effect from 2009, No, there is no authorization. there may not be any authorization, There's but authorization. when the circular came, It's a red circular, my lord. Red Madam, see that. हाँ, It's a red circular. पढ़िएगा फिर से। Yes, Lordship. इस authorization से आपको तो पेज 31 है वो जो 31 A3 Yes, Lordship. पढ़िएगा। ये डिस्टेंस डिटरमिन किया है लॉर्डशिप में काइंडली सी नोटिफिकेशन ऑफ डिस्टेंस Rate of all goods इतना इसको फिर अमेंड भी किया है उन्होंने बाय पेज 32 उन्होंने कहा 5.23 किलोमीटर नहीं है वो 5.65 किलोमीटर है दिस इज नथिंग टू डू विद द ऑपरेशन yes. दैट इज माय हम्बल सबमिशन मैम When distance was shortened prior to undertaking the booking, then you were at least having the knowledge. Or that my lord has rightly pointed out that particular A1 is for the passenger traffic. वो पढ़ लिया लेकिन तो आप क्यों ले गए थे? नहीं इसमें सर Violation- ये इशू इसमें यहाँ डिसाइड हुआ नहीं है और इन्होंने इसको हम डिसाइड करेंगे इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हाँ हैं सर ये जो हम आपसे यही जानना सर चाहते हैं their claim was rejected mainly on the ground कि ये बाद में आया। हाँ ये बाद में आया है हाँ, इसके बाद इन्होंने इसको सिर्फ ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ 106 दे हैव चैलेंज इट they have not challenged this particular order on the ground that this particular circular is not applicable because our material was carried by the route the Definitely, shorter when, route when you carried it through a shorter route, there was a saving to you. हमारा सर इसमें यही है कि ये इनका लॉन्गर रूट से ही गया था क्योंकि वो पैसेंजर के लिए ओपन हुआ था तो ऐसा आपका जवाब है कि लॉन्गर रूट से गया था शॉर्टर रूट से नहीं ये गया था, सर ऐसा है तो नहीं ये मेरे इंस्ट्रक्शंस है जो मैंने अभी इनसे नहीं discuss किया था इंस्ट्रक्शंस है तो उसका एफिडेविट फाइल कर दीजिए। वो हम फाइल कर दें हाँ, कि लॉन्गर रूट से गया था शॉर्टर रूट से गया ही नहीं। वो फाइल कर दें इनफैक्ट मैलोट्स में सी And- फॉर वन मोमेंट वेट सर ये जो ARN 27 है जो कि नहीं ARN 27 नहीं, हम आपका इतना लिखा देते हैं कि ये लॉन्गर रूट से गया था, यू फाइल एफिडेविट ऑफ द DRM कमर्शियल। हाँ कि ये किस रूट से गया था किस रूट से नहीं, आपका सबमिशन लिखा के लिख देते हैं किस रूट से गया था, उसका एफिडेविट फाइल कर दें। नहीं सर ये ऐसा नहीं लिखा है ये लिखा दें कि किस रूट से गया था उससे आदित्य अधिकारी लर्नेड सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाय, मैडम आपका शुभ नाम बताइए प्लीज। जी शिवानी सिंह सेंगर मिस शिवानी सिंह सेंगर। नेक्स्ट श्री पुष्पेंद्र यादव लर्नेड डिप्टी सॉलिसिटर जनरल along with Shri Devesh Bhojne. Issue herein is twofold. Whether material which was sent in railway rates by the petitioner was transported through a shorter route or a longer route, in as much as circular of the railway department authorization of the railway department as contained in annexure A1 authorizes use of the shorter route for passenger traffic only, full stop. Petitioner's case is that in light of this authorization, which authorized usage of shorter route with effect from 8 फरवरी बोला ना? Yes, Dr. The date is given that 18th of February 2008. 18th February 2008, comma, if the goods were taken through a shorter route, then railways are liable to compensate the petitioner for by paying the difference of the freight charges. Full stop. It is submitted that there is a authorization in favor of the general manager of the concerned railway to overlook the delay in matter of refund and process the claims as contained in annexure A8 A8 dated 11/1/95. 11/1/1995, full stop. Thus, it is submitted that a claim could not have been rejected by the Learned Claims Tribunal, referring to Section 106 of the Railways Act 1989, which provides for a limitation of raising claims against the railway authorities by prescribing a limitation of 6 months.
for raising such claims in as much as office memorandum dated 11/1/1995 as contained in Annexure A8 authorizes the Zonal General Manager to entertain such time-barred claims for refund of overcharge. Next para. Thus, case of the petitioners is that if the goods, since the goods were taken through a shorter route, comma, the railways are liable to refund the amount of overcharge. Next paragraph. Shri Pushpendra Yadav submits that firstly, goods were not taken through a shorter route as Annexure A1 authorizes only use of shorter route for passenger purposes. Secondly, even if it was taken through shorter route, then also since the authorization came subsequently on 10/6/2009. 10/6/2009, any transaction which had taken place prior to that will not be covered and no refund is admissible. Next para. Before adverting to the merits, it is necessary to clear one thing as to whether the goods of the petitioners under question were transported through shorter route or through a longer route, original longer route. Full stop. Let affidavit of the DRM commercial in this behalf be filed. DRM commercial Jabalpur be filed in this behalf within 7 days. List this case on 20 दिसंबर 2023. इंस्ट्रक्शंस ले लीजिएगा अगर छोटे से ले गया हो तो। नहीं, वो है मेरे पास लिखित में। नहीं, जनरल मैनेजर से पूछ लीजिएगा। वो एफिडेविट में फाइल कर देंगे, बाकी उनके इंस्ट्रक्शन है मेरे पास। कि शॉर्टर से नहीं गया, शॉर्टर से ही गया, उन्हीं को लॉन्गर से गया है। हाँ, लॉन्गर से गया है तो वो देख लेते हैं, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे देंगे। एफिडेविट अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द रूट ट्रेवल्ड। This matter was discussed for preceding and the claimant advocates were agreed to leave the interest till the date of award. उसके बाद सर इसमें पता चला था कि जो कनेक्टेड मैटर है उसमें एक ओनर की अपील है, तो इफ ओनर इज रेडी टू विड्रॉ दैट अपील तो इट कैन बी सेटल्ड टुमारो वाले। You will satisfy the all awards. हाँ, I'll accept the liability, I'll not execute that pay and recover order. And this was discussed, the claimant were ready to leave the interest till the date of award. कौन आ रहा है ओनर के लिए? हमारी जो अपील है 19.1 है ना आपकी अपील, आप उसको विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है जी, तो कल ही करना है कि आज? कल ही कर, दोनों अपील है? हाँ कल ही करना। कल आएंगे अरुण सिंह जी? मैं कल सर बाहर रहूंगा, मेरे शादी है सर। अच्छा, इसको आज विड्रॉ करा देते हैं और उसको कल रख देते हैं। 19 को लिखिएगा। इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर्स पास्ड इन MA 1909/2016 and the agreement which is made between the insurance company and Shri Aniruddha Pratap Shah appearing for the claimants that claimants are willing to leave the interest part and insurance company is undertaking whole liability to pay the principal amount. जी, principal amount plus interest till the date of award from filing till the date of principal amount along with interest till the date of filing of the appeal. Award, passing of the award. Till the date of passing of the award and shall not press for recovery against the owner driver, comma, Shri Arun, appeal filed by the owner driver is dismissed as withdrawn. Next. 19 नंबर में, ये दोनों में 19 नंबर में लिखिएगा, लिस्ट दिस केस टुमारो बिफोर द। अब लोक अदालत में क्या बचा है, यही खत्म कर देते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट लोक अदालत में क्या रखना, लिस्ट मत सर वो करिए। ऑथराइजेशन का मेल नहीं आया मेरे पास, इसलिए मैं कल के लिए नहीं। अच्छा ठीक है, 19 नंबर को लिस्ट टुमारो बिफोर द लोक अदालत कर दीजिए। सर यही ऑर्डर कल उस वाले में भी हो जाएगा कनेक्टेड में, डॉकेट आज ले लेते अरे हैं। भाई वो है नहीं अभी, कल फिर इनका जूनियर आया तो जूनियर आ जाएगा। दो केस गिनती में भी बढ़ जाएंगे। अरे गिनती नहीं बढ़ाना भाई, काम करना है। आज एक जाने दीजिए, कल एक कर देंगे वहां पर आपका। सर उसमें वो लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर लिया ना, उसका ऑथराइजेशन का मेल नहीं है, इनकी ओनर की अपील की जो। अच्छा चलिए फिर कुछ मत लिखिए, दोनों कल लिस्ट बिफोर लोक अदालत कर दीजिए।
My lords, in that case, we filed an application for substitute service of respondent number 8, my lords. लिखिएगा heard on IA number इतना इतना an application for substituted service on respondent number 8. कहाँ के है respondent number 8? Lords, Bhopal. Let notices be issued, be published in Dainik Jagran having wide circulation in the district of Bhopal. My lords, Steps be taken है we mentioned Raj Express in our app. Jagran. Let steps be taken within 7 days, returnable 4 weeks. Oh, please. In this matter, there are connected 3 other matter which is not listed. So, my lord, तो खत्म कर देते हैं, बाकी 2 आ जाएंगे. 3 और है. हाँ 3 आ जाएंगे, Yes, sir. बताइए इसको Yes. इनके करके चले. My lord, for the injury 5,420 rupees has been awarded. टैक्सेबल है क्या ये लोक अदालत में? तो कल Pay and recover. पे एंड रिकवर है तो आप करेंगे नहीं, बताइएगा. हाँ My lord, 5,420 rupees has been awarded. काय के लिए? इंजरी क्या है? इंजरी जो है सिर में, माथे पे, ठुड्डी में और अदर जगह है. जी. That is mentioned in para 37 and मनीराम लोधी. Yes, मनीराम लोधी 12/58/2015 MCC. क्या किस पैराग्राफ में आई है? Para 37, page number 40. जस्ट अ मिनट. 35 of the judgment, Just page a number. minute. Yes. Para number 37. हैंग हो गया. मनीराम लोधी नंबर 12 बजे 2 मिनट के लिए उठूंगा. खोल दीजिएगा. हो गया. खोल. My lord. भाई फाइल दीजिएगा, उसमें से देख लेंगे. नहीं पूछना. अरे ये अपील मेमो दीजिए ना. पैरा 35. 37, page 35 of the क्या judgment. इंजरी? Yes. मनीराम लोधी ने मुख्य परीक्षण के चरण क्रमांक 1 की अंतिम पंक्तियों में कथन किया है कि दिनांक 7/12/2014 को बस क्रमांक MP 33P 0331 के चालक ईसु परिहार के द्वारा उक्त वाहन को तेजी, लापरवाही व उपेक्षापूर्ण तरीके से गलत दिशा से चलाते हुए लाकर कारित की गई. दुर्घटना के कारण उसके मुंह पर गंभीर चोट लगने के कारण ठुड्डी में गहरा घाव हो गया था. सिर में गंभीर चोट लगने के कारण गहरा घाव हो गया था. सीने में, दोनों हाथों में, पैरों में एवं शरीर में कई जगह अंदरूनी में बाहरी गंभीर चोटें आई. रिकॉर्ड दीजिएगा. ये है ना रिकॉर्ड. उसे इलाज हेतु शासकीय चिकित्सालय झांसी ले जाया गया, जहां पर उपचाररत रहा. तो टोटल 420 रुपए मेडिकल का दिया और 5,000 जो है इंजरी का दिया है. So para 39 my lord, kind of see. देख रहे हैं भाई, एक मिनट. डॉक्यूमेंट क्या है आपके इलाज के? इलाज चिकित्सा महाविद्यालय झांसी द्वारा प्रस्तुत अरे प्रदर्श exhibit क्या है भाई? Para P9. 38 हैं? P9. 38 में प्रदेश P10 जो है चिकित्सीय प्रतिवेदन है महाराणा पैरा 39. सामना. Para 38 39. P9 and P10. साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के चरण 12 की अंतिम पंक्ति स्वीकार किया है. साधारण उपाय कोई ऑपरेशन नहीं किया गया. ऑपरेशन केवल नहीं है. तो कैसे हो जाएगा? डॉक्टर की भी एविडेंस नहीं है. डॉक्टर की भूल. P9 में क्या लिखा है? पढ़िए P9. पढ़ रहे हो? मैं पढ़ूं. P9 है आपके पास में? हाँ, है तो एक मिनट दिखा देंगे प्लीज मेरे को. नहीं, सॉरी P9 नहीं हैं? नहीं. P10 है. नहीं, डॉक्यूमेंट मिलना है. डॉक्यूमेंट्स इसमें भी नहीं लगे, क्या बात है? नहीं लगे ना. लिस्ट दिस केस अलोंग विद MA नंबर. लिख के दे 1192 1194 लिख के दे दीजिए वकील साहब. 3 मैटर और है, टोटल 4 मैटर है. बुलाइए उसको. अलोंग विद इतना इन द वीक कमेंसिंग 18 दिसंबर 2023. रिकॉर्ड सब में आ चुका नहीं, एक में रुक जाइए. आई टेक अ 5 मिनट ब्रेक. रिकॉर्ड होगा, कनेक्टेड है चारों. ठीक है.
अच्छा क्या मतलब है? उम्र कितनी है सर आप? एक ड्यूटी बेहतरीन प्रैक्टिस। अरे नहीं पर जैसे आप नहीं पर पांडे की मैंने बहुत फिट नहीं तभी तो बहुत जमीन का हमने देख ठीक है इक्वल नहीं कुछ लॉयर्स हायर्स के काम किसे पैसे पालन करेगा एंबेसी केस पहुंचा सिस्टम का कोर्ट के भेज रहे हैं खाली पैसा मत जा हम बोल भी नहीं इधर नंबर 20 Sir, probably a delay of 10 days only, man. 10 days तो ठीक है चलिए किस ग्राउंड पर है ये Sir, death. क्या डेट ऑफ एक्सीडेंट है Incident is said to have taken place on 7/5/15. 7/5/15 Yes. क्या करता था मतलब Sir, as such कोई evidence नहीं है. तो कितनी इनकम आनी है 5 लाख. 150 रुपए पर डे 150 रुपए पर डे क्या 150 रुपए पर डे के हिसाब से 4,500 रुपए पैराग्राफ नंबर
मृतक की आयु कितनी थी? तो इसमें लिखे वो 25 से 28 साल वाला। ठीक है, इसी में लिखे, 25 साल लिखे। 25 साल लिखे ना, 25 ही मानेंगे। डेट 7/5/15 को कितनी इनकम है देख लेते हैं। नहीं कंट्रीब्यूशन 6239। ठीक है, लिखिएगा दिस अपील इज फाइल्ड बाय द क्लेमेंट्स बीइंग एग्रीव्ड ऑफ, ये पहले डिले का कर दीजिएगा, दिस डिले ऑफ 10 days, डिले देयर बाय कंट्रोल। दिस अपील इज फाइल्ड बाय द क्लेमेंट्स बीइंग एग्रीव्ड ऑफ द अवार्ड डेटेड 14th July 2017 passed by learned additional motor accident claims tribunal Lucknow district Sydney in claim case number, ये किस claim case number का है ये? 26 है 26/15 on the ground that for an accident which took place on 7/5/2015, notional income of the deceased is treated at rupees 4,500 per month, whereas he was a skilled cocklet machine operator and minimum wages should have been construed accordingly. He is survived by wife, daughter, son and mother, and therefore appropriate deduction should have been made and compensation should have been computed. Next para, Shri Shreyas Pandit, learned counsel appearing for the insurance company, supports impugned award and submits that there is no illegality in the same. Next para, after hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that learned claims tribunal has considered income of the deceased. क्या नाम है डिजीज का? सुनील at rupees 4,500 per month. His age has been accepted at 30 years. Full stop. Minimum wages even for an unskilled laborer on the date of the accident were to the tune of rupees 6,239 per month. Full stop. When that is taken into consideration, then annual income comes out to rupees 74,868. This is survived by 4 legal heirs. Therefore, 25% is to be deducted towards the living expenses of the deceased. Full stop. Looking to the fact that deceased was 30 years of age, 40% is to be added towards future prospects. And then when multiplier of 17 is applied, then total pecuniary compensation will come out to rupees 13,36,394 in place of rupees 6,88,000. 6,88,500 awarded by learned claims tribunal. Thus, there will be enhancement to the tune of rupees 6,47,894, which will be admissible in favor of the claimants. This additional amount will. आपकी अपील कितने का वैल्यूएशन है? 1.5 लाख। हैं? 1.5 की। Full stop. This additional amount will earn नहीं. Full stop. Since appeal is valued only at rupees 1,50,000. बाकी पर आप आज देंगे कोर्ट फीस. Therefore, a sum of interest at the rate of rupees at the rate of 6% per annum will be payable from the date of filing of the claim petition till the date of actual payment on this amount of additional amount of rupees 1,50,000. Full stop. For the remaining amount of rupees 4,97,894, interest will be payable from today when the court fees is being paid at the rate of 6% till the date of actual payment. Other terms and conditions of the award shall remain intact. Appeal is allowed and disposed of, record be sent back. ये सारी figures words में and figures में दोनों में लिखिएगा. None for the petition. Appellant Shri Devesh Bhojne for respondent number 1. As nobody is appearing for the appellant, case is adjourned. List after 4 weeks. Number 24.